Assalamu alaikum. I'm Mirza Suhaib Beg, and today I'm going to discuss the next mock test objective. So our mock test objective, the chapter included the chapter number 24, and the chapter name is evolution. So what is evolution? It's a very mysterious question. For example, look here. These are the different finches that was studied by the Darwin, Charles Darwin, the great. As you know, he was the great evolutionist, and उसने ये मुख्तलिफ तरह की जो फिंचेस देखी they have the different beak shape depend upon the habitat and depend upon the feeding. So now I'm going to explain the first MCQ. First MCQ is of this evolution. The slow and gradual change with the passage of time is called. This is called physiology, ecology, evolution, geology. Geology is the study of Earth. So this one is not a right answer. And ecology is the study of environment and organism interaction, while physiology is the study of structures and their functions. So the right answer is evolution. That is the slow and gradual change with the passage of time. वक्त के साथ साथ जो भी change आएगा उसे हम evolution बोलेंगे. The option C is the right answer of this MCQ. So the next MCQ is MCQ number 2. So which one is the MCQ number 2? Blank published essay on the principle of geology. Geology के ऊपर डार्विन ने तो नहीं किया था, मेल्थस, कुवियर, लाइल. लाइल और मेल्थस. लाइल लाइल इज द राइट आंसर. लाइल जो है चार्ल्स लाइल, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी प्रेजेंट किए फर्स्ट टाइम. और इनकी जबकि मेल्थस जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट किए थे. डार्विन जो है वॉयेज ऑफ HMS बीगल के वाले से पॉपुलर हुए. और ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन द नेक्स्ट MCQ नंबर 3. ब्लैंक पब्लिश essay on the principle of population. अभी मैंने रिसेंटली बताया मेल्थस. Malthus was the scientist who presented the principle of population essay, and the option B is the right answer. So the next MCQ, the prokaryotes originated about blank billion years ago. प्रोक्यूरोट्स दुनिया की एवोल्यूशन, जो ज़मीन की एवोल्यूशन है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो है, जबकि पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वो 3.5 था और वो प्रोक्यूरोट ही था. सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3.5 billion years ago. The eukaryotes originated about blank billion years ago. They are originated after 2 billion years ago of the evolution of prokaryotes. So the right answer is the 1.5 billion years ago. The option is the right answer for this MCQ number 5. The next MCQ, MCQ number 6, the bacteria that can tolerate temperature up to 120 degrees centigrade. It is a group of basically bacteria जो temperature इतना high temperature 120 degree, can you imagine 120 degree centigrade temperature पर भी वो tolerate करते हैं. These bacteria are archaeobacteria. Archaeobacteria mean ancient bacteria जो है वो इस group से belong करते हैं. The origin of life have begun deep in oceans in underwater hot springs. These hot springs are called hydrothermal vents. ये पानी के गर्म चश्मे जिसमें एवोल्यूशन ओरिजिन हुआ था लाइफ का, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे. The endosymbiote hypothesis was proposed by the hypothesis was proposed by the Lynn Margulis. Lynn Margulis वो साइंटिस्ट है. So the option B is the right answer. मेंडल बिल्कुल नहीं हो सकता तो क्योंकि जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के वाले से बताया था. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस Malthus population के ऊपर ऐसे लिखा और Darwin voyage of HMS Beagle. So the right answer is MCQ of the last MCQ is the option B. During evolution of eukaryotes from prokaryotes, flagella develop from. Definitely, they develop from the spirochetes because these are the spiral-shaped bacteria. So that's why the flagella is arise. So Darwin origin of species was published in about. डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे. सो दैट बुक वाज पब्लिश अबाउट 1859. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द नेक्स्ट MCQ नंबर 11. MCQ number 11 is among the birds Darwin collected on the Galapagos Island were blank type of finches. He collected about 13 different type of finches, and the option C is the right answer. MC number 12, blank is an armored mammal, live only in America. Armadillo, ओनली आर्मेडिलो, बिकॉज आर्मेडिलो वो वाहन एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है और आर्मर्ड है, बॉडी कवर्ड होती है इनकी ड्यूरिंग मेटाफेज. सॉरी फॉर दिस. सो द नेक्स्ट MCQ इज MCQ number 14. The geographical MCQ number 15. The geographical distribution of blank is called biogeography. Which kind of geographical distribution of blank is called biogeography? The geographic distribution of classes, the geographical distribution of phylum, species, or community. So the right answer is option C.
the species, the geographical distribution of different species is called biogeography. The next MCQ, gill pouches in terrestrial animals develop into gills. बिल्कुल नहीं, क्योंकि gills सिर्फ gill pouches से बनते हैं in case of fishes. So the right answer is eustachian tube that connect the ear with throat. So throat और ear का connection है और वो gill pouches से develop होता है. The oldest known fossils are prokaryotes. Definitely bacteria जो है वो सबसे पुराने living organism है, तो उन्हीं के fossil सबसे पुराने होंगे. The vestigial organs present in whales. पेल्विस तो थी बिल्कुल, अपेंडिक्स नहीं ह्यूमन में है, वो उस पे नहीं है वेल में. ईयर पिना भी ह्यूमन में. पेल्विस एंड लेग बोन, both of these, so that's why D is the right answer. Option D, pelvis and leg bones are vestigial organ in whale. MCQ number 19, blank are historical remnants of structures that was functional in the ancestor but functionless today. Ancestors में तो functional थे लेकिन अभी वो functionless हैं. So these organs are called as the vestigial organs, because homologous organ, the organ that have the same structure but different function. Analogous organ, the organ have different structure but same function. So vestigial organ, the organ that are functional, that was functional in the past. Option C was the right answer. Forelimb of man, horse, bats and whales are functionally different but structurally alike. वो organ जो structurally एक जैसे हैं और functionally different है, homologous organs है. Option A is the right answer. According to molecular biology study, as evidence of evolution, blank is a respiratory protein present in the aerobic species. Anaerobic species में hemoglobin तो सभी में नहीं होता, myoglobin में सभी नहीं होता, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी इज द राइट आंसर. सो साइटोक्रोम सी वो वाहद ऐसा पिगमेंट है दो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस पर एविडेंस का एक लिंक क्रिएट करता है मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर. द टोटल एग्रीगेट्स ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जो जितने भी जीन्स होंगे वो उसकी जीनोटाइप सिंगल पर्सन के वाले से, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस है, जीनोम एक सिंगल इंडिविजुअल के जीन्स हैं और जीन पूल इज द aggregates of genes in a population. Blank is a change of frequency of alleles at a locus that occur by chance. अगर चेंज जब भी होगा तो वो म्यूटेशन होगी, लेकिन अगर बाय चांस होगा तो देन डेफिनेटली जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 23. Blank, or you can say the ultimate source of all evolutionary changes affecting gene frequency. All of these evolution changes or the source of that evolution changes is called what? Mutation, genetic drift, selection, gene flow. The right answer is option A, mutation. So these are the some most important MCQs related to this chapter number 24. So जितनी जल्दी हो सकता है, मुमकिन जितना मुमकिन हो सकता है इसको रीड कीजिए और इसको याद कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू वेरी मच. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.